गोदल अछि हमर जन्मभूमिक नाम मिथिलाक्षर में। सिमरिया घाट पर राजेंद्र सेतु जकाँ ठाढ़ होयब नहीं अर्घैत अछि हमरा, अपन अस्तित्वक द्वंद्व में मग्गह सँ मिथिला होबऽ चाहै छी हम। कोनो महफाक कहरिया सन विस्थापित जिंदगीक ओजन ढोइत पढ़ै छी कखनो अलबेयर कामू तऽ कखनो विद्यापति। दनानक क्विंटा में कॉल पर नहाइत हमर प्रेमिका एखन डूबि गेलियै स्विमिंग पूल में। कोनो नगरक किलकारी सुनऽ सँ पहिने कटलहुँ अछि अपन पुरैन हम अपने हाथे। एहि जिंदगीक जड़ि में एकटा आत्महत्या अछि पहिने। चानी सन चमकैत एकटा निशाभाग राइत में चार मीनारक अंगना में नौलखा अरिपन लिखैत करेज पर पांचों आंगुरक संवेद थप्पा मारि कहियो चिचियात हमर चेतना, मिथिला मिथिला मिथिला। इस कविता का शीर्षक है हस्तक्षेप। ओस से भींगा पारिजात का फूल मिट्टी पर गिरा अहले सुबह। ओस से भींगा पारिजात का फूल मिट्टी पर गिरा अहले सुबह। उठाया गया हाथों से या रौंदा गया पैरों तले, यह आंकना कठिन है इस समय में। यूं खिलना तो आग्रह है फूलों का, अभी जो देख पाना संभव नहीं है रोशनी में। अंधेरों ने बढ़ा लिया है इस शताब्दी से अपना परिचय। गाजा पट्टी के मलबों पर खड़ा हुआ मैं देख रहा हूं उस बच्चे का रास्ता जो निकला था सुबह पारिजात के फूल चुनने। अभी नहीं लिखूंगा मर्शिया, बंदूक नहीं उठाऊंगा किसी भी कीमत पर। औंजली भर हाथ भरा है पारिजात से, औंजलि भर पारिजात लुटा दिया है आकाश के अचल विस्तार में। अग्निवर्षा के विरुद्ध यही है मेरा हस्तक्षेप। एक मैथिली कविता। जंगली फूल। जंगल के बाट में भेटैत अछि कतेको अपरिचित फूल। जंगलक बाट में भेटैत अछि कतेको अपरिचित फूल। फूलक संग लागल अबैत अछि एकटा उत्कंठा, किएक फुलाइत अछि जंगल में फूल। कोना बिहलैत होयत अपन रंग, कतेक दारुण हेतै निर्मालक अभिलाष में फुलायब। पछवाक रमकी में सिहकैत एहि फूलक समुद्र बनबैत अछि एकटा मनहर चित्र, जेना कि असंख्य गुड्डी उड़ि रहल हो आकाश में। कोनो बनकिरिया युवती खोपा में गाथल डिगडिगियाक चोट पर उत्सवक घोषणा करैत अछि जंगली फूल। हेजक हेज फूल बढ़ि रहल अछि नगर दिस, ओतऽ बसावत अपन साम्राज्य जतऽ कि लोक आब जंगली भऽ रहल अछि। एकटा संवेद ध्वनि सँ कंपित होइत अछि जंगल, अनेरे नहीं फुलाइत अछि जंगल में फूल। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी विजय रानी जी को। आप पेशे से सिविल सेवक हैं, आप कवयित्री और उपन्यासकार हैं। आपके दो कविता सदाबहार खोज और तुम जंगल हो मैं बारिश हूं तथा एक कहानी संग्रह प्रकाशित है। आप पुडुचेरी फाउंडेशन पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आप सभी के बीच में विजय रानी जी। அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் இலக்கியவாதிகளுக்கும் அரங்கில் அமர்ந்துள்ள இலக்கியவாதிகளுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகிறேன். இந்திய ஆட்சி பணியாளராக நான் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். எங்கள் தமிழ்நாடு மிக சிறந்த இலக்கியங்களை தன்னகத்தே கொண்டது. சங்க இலக்கியங்கள் அதற்காக மிக சிறந்த விதிமுறைகளை கொடுத்துள்ளது. சங்க இலக்கியங்களில் அகமும் புறமும் கொடுத்தது எங்கள் வாழ்க்கை. அதனைத் தொடர்ந்தே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அகநானூறு இல்லறத்தில் உள்ள அமைதியையும்
இல்லறத்தில் உள்ள அன்பையும் பறைசாற்றுகிறது. அகநானூறை தொடர்ந்து புறநானூறு வெளியிட வாழ்க்கையில் மனிதர்களின் சேவையையும் போரையும் தொழிலையும் செம்மைப்படுத்தி காட்டுகிறது. இதை நான் I'm going to translate this in English. My first respectful wishes for the dignitaries in the dais, my co-poets, and for the dignitaries giving audience here. I belong to Tamil Nadu. I'm working as an IAS officer. My passion is literary. I have published several books, poetry books. I very strongly believe that the harmony in the home, the compatibility will contribute to the society in the external life. Our Sangam literature speaks this. By following the footpath, I have written a poetry books, 2-3 poetry books. It speaks the compatible life of the human being at home. The compatibility, the love and affection at home will make the person to deliver very strongly, very firmly to the society. I'm going to read the few poems from my poetry books already published and also awarded. At the last, I'm going to give a tribute of one poetry. With this, I start with my book poetries. This first poetry. நீ பெய்யென்றால் பெய்யும் மழையா நான், என் நேசம் தின்றுவிட்டு முளை விடாது கடந்த நீ, என் நேசமெல்லாம் விழுங்கிவிட்டு முளைவிட்டு கிளைவிட்டு விருட்சமாகி வனமாய் கிடக்கிறாய். வறண்டுவிட்ட எனக்கு ஈரம் கூட திருப்பிக் கொடாது மறுத்துவிட்டும் மறந்துவிட்டும் ஈரமே அற்ற வனமாய் நீயும். நேசம் தேடும் துளிகளோடு மலையாய் நானும். English translation of this. You the forest, me the rain. Is my affection rain for you? On your command to shower, you remain unsprouted seed, having swallowed all my affection, now sprouted out, branched out, grown as huge tree, emerged as large woods, now am I dry cloud. Refuse to reciprocate and forget to return a droplet, even the moisture. Finally, you remain as moisture bound forest, and I remain as moisture searching rain droplet. And this is உன் இதய குறிப்பில் நான், diary notings of your heart. உன் இதய குறிப்பில் என்னுடனான நாட்களை உன் இதய நாட்குறிப்பின் பக்கங்களில் இப்படி எழுதி வை. ஆங்கொரு நதி அமைதியாய் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது. நான் கனத்து சோர்ந்து அதை தேடிச் சென்று அமர்கையில் எல்லாம் தன் பளிங்கு விரல்களால் என் பாத விரல்களை வருடிவிட்டு முத்தம் கொடுத்து முகிழ வைத்துவிட்டு பக்கங்கள் நகர நகர தன் பாதங்களை வருடிய நதியும் நகர்ந்து நெடுந்தூரம் போனதென்று. Translation is, in diary notings of your heart, please register this in your heart's calendar. Of the days you spent with me, there was a river that moved slowly. When you were tired and worn out, you sat on the bank of the river. With its crystal fingers, embraced and kissed your tender feet that put you on bloom. When the pages turned over and over, the river that embraced your feet has also moved away too far. This is about somebody have contributed their emotions to us. They made us to grow. They made us to branch. They have given all the solace
whenever we require, we just forget them and leave out. This is about the DP profile photo. Every day we will come across this. அலைபேசியின் சிறு வட்டத்துள் சிரித்து கிடக்கிறாய். விரைந்து எதையோ தேடுகிறேன். தேடுகையிலெல்லாம் விரலுக்கடையில் மாட்டுகிறாய். தேடுவது மறந்து போகிறது. பிறர் சிரிப்பதும் மறந்து போகிறது. என்னை அறியாமல் தேடியது நினைவு வர மீண்டும் விரைந்து தேடுகிறேன். இவ்வாறு தேடுதலும் விரல்களில் மாட்டுதலுமாய் நடக்கிறது ஓரங்க நாடகம். This is DP photo. Laughed out at small circle of my mobile while searching for something. While searching for something, you are grabbing in between the fingers. The searching disappears, forgetting the surroundings, and suddenly smile is blooming. Then remembering about the search, the fingers resorting to the search again. The search blended with the clutches continues like one act play. Continues like one act play. This is repeatedly happening every time when I see the profile photo of you. This is Pudhiya Agaradi. We have created new dictionary. எங்கோ துருவங்களாய் கிடந்தோம். எதுவாகவும் இல்லை நாம். மௌனங்களே பெரும்பாலும் மொழியாய் கடந்தது. புரிதல்கள் எவ்வடி வெடுத்து இதயத்துள் புகுந்ததென்று தெரியவில்லை. உற்றுயிர்த்து கிடந்தால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் என்று நினைத்த ஒன்று நமக்குள் பிறந்தது. புதிய அகராதி படைத்தது. It's creating new dictionary. Somewhere we existed as poles. We have not became anything. We have not became anything. Almost our silence was the language. Our silence was the language. Never knew how understandings entered into the heart. The one, the unnamed the one, which is possible to happen only through exchanging soul and physics have happened between us. The grammatical rule of relationship is broken and created new dictionary on us. Very decently, this speaks about the human relationship, how the silence can also bring the good emotions between the souls when understandings is there. This is finally, I want to make a poetry here, which is tribute. Everybody, every one of us will be having this on our heart. I wanted to read it here. நான் உணரவே இல்லை. என்னை குட்டி பிறரிடம் மரியாதையாக பேசு என்று நீ சொன்ன பொழுது உன்மேல் கோபம் வந்தது. நான் உணரவே இல்லை. என்னை ஆடைகளை நீ ஒழுங்காக உடுத்திக்கொண்டு வெளியே போ என்று சொன்ன பொழுது உன்மேல் எரிச்சல் வந்தது. நான் உணரவே இல்லை. என்னை திட்டி திட்டி படித்துக்கொள், அதுவே உன் முதல் வாழ்க்கைப்படி என்று நீ சொன்ன பொழுது எனக்கு ஆங்காரம் வந்தது. நான் உணரவே இல்லை. இரவு எந்நேரமானாலும் உன் இருப்பிடம் வந்து நீ சேர் என்று சொன்ன பொழுது உன்மேல் மிகுந்த ஆங்காரம் வந்தது. என்னை நீ சிறைப்படுத்துவதாய் தோன்றியது. நான் உணரவே இல்லை. நான் உன்னுடன் வரமாட்டேன். நீ தனியாக சென்று உன் பணியை செய்து வா என்று நீ சொன்ன பொழுது உன்மேல் என்னை புறக்கணிப்பதாய் கோபம் வந்தது. இன்று நான் என் மிக சிறந்த வடிவமாய் நிற்கிறேன். மதிப்புடனும் மரியாதையுடனும் ஆளுமையுடனும் இந்த சமூகத்தில். ஆனால் வெறும் கோபத்தையும் ஆங்காரத்தையும் வெறுப்பையும் என்னிடமிருந்து சம்பாதித்த நீ இல்லவே இல்லை.
நான் அதை உணர்ந்த பொழுது அம்மா, மதர், மா. Every one of us will be having this, the translation of this. When I felt that, I did not feel that when you hit my head to talk to others with respect, I was angry on you. I didn't feel that when you pinched me and to dress properly in the public, I was averted you. I didn't feel that when you scolded me and told that study well, that is the first person to hold on you in this world. I was become very wild on you. I didn't feel that whenever I was supposed to go alone, I called you. You didn't accompany me. You told me to go alone. I thought that you are leaving me alone and you are not taking care of me. I refused to listen you. When I felt that, I stood as a best version of me with respect, with confidence to face this society. When I feel that you are not with me, mother, you left me by giving all this virtue to me. Thank you for the Sahitya Akademi to give me this best opportunity to deliver my poetries here. Thank you. धन्यवाद मैम। अब मैं हमारे अध्यक्ष महोदय को बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे शफी शौक जी का। मैं पर बैठे मेरे साथी कवियों, मेरे सामने भी कुछ लोग हैं, उनमें भी कवि होंगे। पिछले 42 ईयर से मैं हर साल इसी जगह आता रहा हूँ, यानी कि 1987 से आज तक हर साल फेस्टिवल होते हैं and I am invariably invited to participate. And for the first time, I was asked to preside over the session. But this is very unfortunate that I had to seek my name on the list, and then nobody could find it. Even the coordinators couldn't find it, my name, because everybody, even myself, then we had to go to the secretary, and then he's the chairman. So so it was not there on the list, but it was written and unexpectedly so, perhaps. So because of my age or whatever, I am here for so many years. I have been working with the Sahitya Akademi. When Medieval Indian Literature 3 volumes was edited, I was the editor. When Encyclopedia of Indian Literature 7 volumes was edited, I was the editor, and K. Papanika was the chief editor, so on and so forth, so many other enterprises. Just a while ago, I was having a stroll outside this hall, and I was a bit horrified to see, as if I felt myself I was walking through a mortuary, because all of them are gone. Perhaps I am settled there for no fault of mine, but I am happy that I am settled with you. So I write continuously. I have authored more than 130 books in different languages, English, Urdu, Kashmiri, etc., etc. But every time I feel that Indian poetry, which is one poetry, is failing in one respect. That is, we are talking of generalities, not of the very small things that are immediate to us.
So poetry has become a repetition of the hackneyed cliches, etc., from Ramayana, Mahabharata, and Puranas, and and I have translated most of them. So when I hear some poet of today, and they repeat the cliches of the medieval times, they are great works, but our job in this world, in this 21st century, the first quarter of the 21st century, is to devise some new ways of writing poetry, because otherwise we'll be marginalized, will be written in the margins of history. As you can see, hundreds of poets, their profiles are there, but none of them is remembered now. I know them personally, but none of them is remembered. They have just vanished away from, as if they were nowhere there, like Shakespeare and ghosts, much talked about, but seen nowhere. So my problem is, today, when there are challenges that you can be an author of a poetry collection within no time, within half an hour. This is what Copilot says. This is what DeepSeek says, and so many other artificial intelligence agencies. And it's true. You can just try it, give the thought, you will have a very beautiful finished poem. Then where is our position? Again, I am not going to, मैं किसी वाज नसीहत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि when we are talking the mirror of the soul, the poet mirrors the soul, but soul is not something there which you can find, you can point out, and you can retrieve from your existence and show it. It is not that, but soul is your immediate consciousness towards the ambient world, towards little things, plants, flowers, street urchins, beggars, uh, and lipstick wearing people in the street, LGBT people, so many other things. We can talk about them, but when we have some kind of empathy with them, not sympathy, but empathy with them, we must be able to feel in their existence. If we are able to do that, we will come out of those medieval cliches, shibboleths, and hackneyed expressions. Let us talk in a different metaphor. Otherwise, artificial intelligence has left no scope for all of us. So innovative, you can do wonders with artificial. So yesterday night, I wrote a poem for this session to be different, in a very different manner, write in a different, I have been writing so many collections, thousands of poems are published in Indian literature, medieval India, Samkala Sahitya, etc., etc., translated into most of the languages. But my genuine poetry is like this now. So I will, I think, I have the prerogative of going beyond my time, but I will not do that because most of you are feeling hungry. But I'm tempted to read out a small poem that I wrote only yesterday for this very occasion. So I will read out the poem and you will understand who the protagonist is, who is the main speaker. I will read out the translation itself instead of the original poem. The title of the poem is Let Me To Be There. Let me to be there. मुझे भी वहां रहने दो. मगर अब कौन कहता है वो खुद ही जानेंगे. You keep my hooves, HOOVES. You keep my hooves trimmed. The trimmings could make you a good amulet. Who's wearing the hooves? You can understand.
whose donkey or horse, or but it is the donkey. So it is, I personalize a poet of the centuries in the form of a donkey. But donkey says, "You keep my hooves trimmed, the trimmings could make you a good amulet. Keep my hooves nailed, as the bridal path is precariously sloggy." वो रास्ता बहुत खराब है. "Let you buckle up the loose ropes of my saddle. I would carry heavy loads of your sins right up to the ghat." Our Vitasta, the river that flows through Kashmir, our Vitasta has ample scope to contain your sins. No room I find in my stable, in any stable, barn, pen, or shed. Yet my tantrums are to take tantras. Yet my tantrums are take as tantras, for my job is accomplished by other means. My job is accomplished by other means, be it deep seek or co-pilot. For my job is accomplished by other means or more easily. Ah, the time when they carried idols on my back, and I enjoyed seeing all people kowtow before me. Or in ire, I would bray and make clumsy movements, made men and women, children thrash me. That did me good. I found my path ahead was blocked. If I found my path ahead was blocked, I ventured to climb up, down the stairs, a donkey. If the heartless salt seller was greedy and made my yoke heavy, I dived deep in water instead of choosing fords. नमक वाले घोड़े की बात. So I even carried the sinners on my back with a face towards my tail and paraded them in streets. I could do a lot of jobs now. When I am no more needed, I am no more needed, the poet. We know each other here. Just go outside, you will not be recognized who the people are, what they are doing. Nobody bothers. Nobody understands you. It's a weird talk. We have become an in-group. We mutually respect each other, read each other. Otherwise, we have lost that social contact. I'm still available. So now when I'm no more needed, I keep musing near ash bins, dung heaps, and piles of offal. This is what a poet of today does. I am still available. I am still available to wander in the valleys of an illusion. This is my Quranic text that says they are wanderers in the valleys of illusion. So I say, I am still available to wander in the valleys of illusion. I could bray or stand on my hind limbs or even give leg kicks or lug piles of sins to the ghats where you got yourself washed. Do not exile me from this place. Do not exile me from this place. Please let me too be there. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष महोदय, आप सभी कवि और कवयित्री का और आप सभी श्रोतागणों का भी. ओके सर. It was actually mentioned in all of the introduction. It was actually mentioned. That's why I'm just asking this. ठीक है, तो ये सत्र हमारा यहीं पर समाप्त होता है और ये सभा भी यहीं पर होती है. पुनः आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ. थैंक यू.